हमर इंस्ट्रक्शन बहुत इंग्लिश एंड ओडिया रे मेंशन हे अछि जेमिति यूपीएससी स्टाइल यूपीएससी रो जोटा स्टैंडर्ड अछि ओके यूपीएससी स्टैंडर्ड हिसाब रे सेमती डिजाइन ही अछि फॉर एन एग्जांपल देयर आर 8 क्वेश्चंस printed in both Odia and English. Question number 1 and 5 are compulsory and 3 are to be attempted choosing at least one question from each section. Okay. Question number 1 और question number 5 टा होचे compulsory तारो सब गुडा लिखिया पड़िबो आउ रिमेनिंग कोनोसे भी रो तीनटा तुमको लिखिया पड़िबो तो टोटल मार्क होचे 250 मार्क ये होचे सेक्शनल टेस्ट नाउ इट भी लिखा है जी in case of any discrepancy in the meaning the English version will prevail অর্থাৎ যদি ওড়িয়া এবং ইংরাজীর কোশ্চেন ର ଅର୍ଥର ଯଦି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ ଇଂରାଜୀରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚେନ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଅର୍ଥଟା ହିଁ ସେଟା ପ୍ରିଭେଲ କରିବ ସୋ ଆସ ଦେଖିବା କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଶ୍ଚେନ କେମିତି ଲେଖିବା PSIR ଅପସନାଲ ପାଇଁ ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ମାର୍କ ଟିକେ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅପସନାଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରିପାରେସନ୍स କରୁ ट्राई करवा दरकार जे केमिति टिके 170 80 प्लस रहिबो मार्क्स बोथ जीएस पर या पर पेपर 1 एंड पेपर 2 तो जेहेतु सिलेबस चेंज हेची सॉरी हमरो पैटर्न चेंज हेची तो सेही हिसाब रे देखिया गले हमको से लेवल ऑफ प्रिपरेशंस भी दरकार सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो पचार जी कोन हमरो कोन 1 रु 5 नंबर क्वेश्चन होची कोन हमरो ये कंपलसरी 1 एंड 5 होची कंपलसरी आ गोटे होची तमरो रिमेनिंग क्वेश्चन आर नॉट कंपलसरी बट तीनटा मिनिमम तुमको लिखिया पड़िबो मतलब गोटे ब्रीफ तुमको देखाई देबे क्वेश्चन पेपरटा ओके प्रथम ये क्वेश्चन देखिबा सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ये देखि पारथिबो केमते अछि एक नंबर क्वेश्चन रे टोटल 5टा अछि रिटन इन बोथ ओडिया एंड इंग्लिश देन 2 नंबर क्वेश्चन रे तीनटा अछि 20 मार्क 15 मार्क एंड 15 मार्क जेमते यूपीएससी स्टाइल रो 2 3 4 क्वेश्चन भी से बोले अछि ओके 5 नंबर क्वेश्चन रे पुनी फर्दर 5टा अछि 10 मार्क ईच जोटा कि कंपलसरी देन 6 7 8 सेटा होजी तमरो अगेन यूपीएससी स्टाइल रो 20 15 15 मार्क पूर्व तमरो पैटर्न हिसाब रे 60 मार्क रो आस्तला बट हाईली पॉसिबल दैट एथरो नो आसी पारे 20 15 15 मार्क रो पैटर्न जोटा सेटा आसी पारे सो एटा होची तमरो ब्रीफ क्वेश्चन पेपर पीएसआर मॉक टेस्ट 1 जोटा अछि एवं वी हैव ट्राइड टू चेंज द पैटर्न क्वालिटी आल्सो के अधिक करिया पाई यूपीएससी स्टाइल रे करिया पाई सो दैट तमे माने एग्जाम पाई रेडी रहिबो तो ए जो क्वेश्चन गुडा अछि क्वेश्चन सहित वर्तमान हमहु देखिया पड़िबो आंसर यार केमति हुए ओके सो लेट अस ट्राई टू डिस्कस अबाउट कपल ऑफ आंसर्स किछि किछि सिंपल क्वेश्चन मो डिस्कस करबी किछि ट्रिकी क्वेश्चन मो डिस्कस करूची सो दैट इजी हे जिवो समस्त को मो क्वेश्चन पेपरटा
ଏଠି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦେଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜି। ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ପଚାରିଛି ଲକ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି। ଏବେ ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି ଅଛି ନା, ଲକ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଏହାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଜାଣିଛ, ପଢିଛ? What is Locke's social contract theory? କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଆଇ ଥିଙ୍କ, ଯଦି ପଢିଥିବ ନହେଲେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବ କି ଲକ୍, ହବ୍ସ ଏମାନେ ସିମିଲାର ଥଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ ବେସିକାଲି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ? କହୁଛନ୍ତି କି ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା 150 ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ତମେ 10-20 ୱାର୍ଡସ୍ କହିପାରିବ, ସେତିକି ଭିତରେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସୋ ଜନ୍ ଲକ୍'s social contract theory expounded in his 1689 work True Treatises of the Government. ଓକେ, ୟାକୁ ତମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବ, ଏଥିରେ ମୁଁ ବୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି। It is a well-known and influential theory of political legitimacy. Locke argued that government exists only by the consent of governed, and the individuals have the right to check their government and retain power in the majority. Okay, so this theory has been extensively debated, but it remains a valuable normative argument for the legitimacy of the government. It is also practical and applicable to the real-world political systems. So ତମେ କ'ଣ କହିଲ କି ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ସ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଓରିଟା, it is coming from the work of True Treatises of the Government, and government ର legitimacy ଉପରେ basically এটা ଲେଖା ହେଇଛି। At the same time, citizens also have the right to check the government. Okay, then ଆମେ ଦେଖିବା ବ୍ରିଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପରେ यार केते प्रोसेस ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଅଲଗା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। While some critics argue that Locke's theory is impractical because it fails to account dissent, Locke himself anticipated this criticism. He argued that individuals do not surrender all of their rights when they enter into social contract. ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଲି, ଜନ୍ ଲକ୍, ହବ୍ସ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଦେ ଆର୍ ମୋର୍ ସିମିଲାର। ତ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଏଠି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ଯୋଉଟା ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ, they need not to surrender all the rights, okay, and they retain the rights to resist oppressive government. ସେମାନେ ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କୋଉ ରାଇଟ୍ଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି? they have the right to resist an oppressive government. ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅପ୍ରେସିଭ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଏଭ୍ରି ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସୋ then another criticism of Locke's theory is that it is historically implausible. Okay, however, Locke did not intend his theory to be literal account of how government arose. Instead, he used the social contract as a heuristic device to explain the moral basis of political authority. So ଏଠି ଜନ୍ ଲକ୍ ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେବେ ବି ଏଇଆ ନଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଫର୍ମେସନ ହବ। He was not focusing on formation of the government. What he was focusing कि ଯୋଉ ଅଥରିଟି ମାନେ, ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଅଥରିଟି ମାନେ ଷ୍ଟେଟରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ମୋରାଲ ବେସିସ୍ କ'ଣ ହବା ଦରକାର। Okay, so he was trying to explain, he was trying to argue more on that point. So Locke's theory provides a compelling argument for why consent is essential for political legitimacy. ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ତମେ ଜବରଦସ୍ତିରେ ପାୱାର ତମେ ଏକର କରିପାରିବନି, କିମ୍ବା ଜବରଦସ୍ତିରେ ତମେ ତମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବନି, ଅଥରିଟି ଫର୍ମେସନ କରିପାରିବନି। So to form the state, to form the authority, you need consent of the people. ତମକୁ
ଲୋକମାନଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ପଲିଟିକାଲ ଲେଜିଟିମେସି ସେଟା ଆମକୁ ଦରକାର। So in conclusion, John Locke's social contract theory is legitimate, practical, and influential explanations for the formation and functions of the government. Locke's theory provides a convincing argument for why consent is essential to political legitimacy, and it aligns with the principle of representative democracy. So 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ବ୍ରିଫଲି ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ ଲକ୍ସ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି 60 ମାର୍କସରେ ବି ଲେଖି ହବ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଏଇଟା। 60 ମାର୍କରେ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଡିଟେଲରେ ଲେଖିବ କି କ'ଣ କ'ଣ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ରାଇଟ୍ସ ମାନେ ଡ୍ର କରିବେ। ବଟ୍ ଏଠି ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, 150 ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆମକୁ ବ୍ରିଫଲି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଏଣ୍ଟସ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଥଟ୍ has been either Platonic or anti-Platonic, but hardly ever non-Platonic, said by Popper, Karl Popper. Question ता प्रथमे आमे बुझिया पे ट्राई करबा। कोन कहउछथि कार्ल पपर इज अ क्रिटिक ऑफ प्लेटो। तमे समस्त जानि थिबो कार्ल पपर इज सेइंग, कार्ल पपर कोन कहउछथि दैट प्लेटो, हेगेल, so they are enemy of open society, said by who? Said by कार्ल पपर। सी कौन कहउछथि, सी कहउछथि कि वेस्टर्न थॉट हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक, बट हार्डली एवर बीन नॉन प्लेटोनिक। अर्थात कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रिवॉल्व्स अराउंड प्लेटोज आइडिया। ओके, बुझी पारछो। सो आमे कोन जानछे, प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो यार आंसर ता जानिबा दिगे केमती कोन लिखिबा कि प्लेटो, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर इन हिस्ट्री, लेफ्ट ए लास्टिंग लेगेसी ऑन वेस्टर्न थॉट। ओके, सो तांकर से जो क्वेश्चन रो अर्थ होची कि वेस्टर्न थॉट ता को आइदर तमे प्लेटोनिक कहि परिबो, माने तमे प्लेटो रो सपोर्ट रे कहि परिबो, किबा तुमको तमे प्लेटो को क्रिटिसाइज करि परिबो। बट एटा पॉसिबल ही नुह कि तमे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स विषय डिस्कस करूछो और प्लेटो को विषय तमे मेंशन ही करिवोनी, तमे नेग्लेक्ट करि परिबोनी। यू कैन नॉट इग्नोर प्लेटो। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो प्लेटो, एटा में जानिले हिज की कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, डायलेक्टिकल मेथड्स, ethics, politics, justice, connection, communism of vibes and property, and ideal society। आज पर्यंत आम कौन करूँ, डिबेट करूँ ये सब विषय। किसी पॉइंट तुम ए लिखो, प्लेटोस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स asserts the primacy of ideas over material world, influential हेगेलियन आइडियलिज्म। ओके, जो मिथ्स ऑफ मेटल कॉन्सेप्ट अछि तुमर गोटे, मिथ्स ऑफ मेटल कॉन्सेप्ट अछि। Then his dialectical method, से कोड आनिसथि dialectical method ता, he is bringing the dialectical method to find out what, जोटा हमर सोक्रेटिस अछंती, सोक्रेटिस तो कोसी आनिसथि, and he is trying to find out knowledge is virtue, जोटा concept अछि तुम जानथिबो। सो प्लेटो कोन करछन, निजर डायलेक्टिकल मेथड ता कोठी यूज करिया पे हमें देखा देइ छै, जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस जेतो से दउछंती कि जस्टिस कोन से डिस्कशन करूछंती विभिन्न प्रकार व्यक्ति मान सहित गोटे डायलेक्टिकल मेथड सहित निजर से दौरान जस्टिस कौन, व्हाट इज जस्टिस, है ना। देन प्लेटोस एपिस्टेमोलॉजी लिंक्स विजडम, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, अ कनेक्शन फर्दर डेवलप्ड बाय हाना आरेंट, एम.के. गांधी, and his insight on justice role in stable political communities remain relevant today। Okay, then तमे जानछो प्लेटोंकर गोटे राइटिंग अछि, प्लेटोस रिपब्लिक introduces the concept of communism of vibes and property, highlighting governance challenges like corruption and nepotism. He laid the foundation of political idealism. Alongside Aristotle, Plato established the bedrock of Greek political theory, shaping the Western political traditions. Whitehead's observations that the European philosophical tradition is set of footnotes to Plato and Aristotle is a testament to his enduring influence। Okay, Whitehead कौन observation करथिले, कार्ल पपर भी सेही वाला जो कहिथिले कि the entire political philosophy is nothing but a footnote to Plato and Aristotle। ओके, तो एठो हम कौन जानले, एठो हम जानले कि इधर तमे प्लेटोंकर आइडिया को सपोर्ट करि परिबो किबा तमे प्लेटोंकर आइडिया को क्रिटिसिज्म करि परिबो, बट एटा पॉसिबल नुह जे you are discussing the political philosophy and you don't mention the figure Plato।
So this is why it is very important. Okay. So ସେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦେଇଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଅନ୍ ସୋସାଇଟି। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଥିଙ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଲିଭ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଗୋଟେ ଆମେ କୋଟ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଲିଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ଟୁ ଇଟ୍ and in order to eat man has to produce, said by whom? Said by Marx. So then ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ Marx has established the importance of manual labor over intellectual labor. ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ brief question, ସେ view on society, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ society ବିଷୟରେ କ'ଣ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଫଲି ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ତମର, ଟିକେ क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा, जोटा कि 20 मार्क्स और 15 मार्क्स रो क्वेश्चन गुड़ा। Power is everywhere. Explain this reference to focus theory of power. फोको पावर को ऊपर बहुत अधिक कॉन्सेप्ट देइछंती। एटा गोटे स्टेटमेंट आउसी कि पावर इज एवरीवेयर, पावर सब जगह रहसी। ए स्टेटमेंट को व्याख्या करो, ए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो भाया विथ रेफरेंस टू फोकस थ्योरी ऑफ पावर। ओके, 20 मार्क रो क्वेश्चन पाखापाखि हमको 250 वर्ड्स रे अप्रोक्सीमेटली लिखिया पड़िबो। सो केमिति स्टार्ट करिबा, अगेन हम इंट्रोडक्शन रो स्टार्ट करिबा कि माइकल फोको revolutionized the understanding of power with his concepts of disciplinary power, biopower and government mentality. He rejected or rejecting the traditional judicial legal view of the power. He emphasized a micro perspective, arguing that the power is omnipresent, dispersed throughout society in capillary network of resources. अर्थ सी कौन आर्ग्यू करछली, सी कहिसंती कि पावर सब जगह अछि। पावर इज एवरीवेयर प्रोवाइडेड तमे ताकू जदि प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि पारिबो। पावर इज एवरीवेयर। सो नेक्स्ट सी कौन कहिसंती, ही हैज आइडेंटिफाइड 3 की कंट्रोल टेक्निक्स इन मॉडर्न डिसिप्लिनरी सोसाइटी। कौन कौन? गोटे जे हायरार्की ऑब्जर्वेशन, गोटे मॉडर्न डिसिप्लिनरी सोसाइटी रे को केमिति कंट्रोल करबा, hierarchical observations करिया, normalizing judgment and through the value of examination. So इठू फर्दर बेंथम कर जो काम अछि panopticon exemplified modern disciplinary power। सी आउरी modern disciplinary power को सी कोन करछन, आउरी सी analysis करिछन and demonstrating that control is achieved through the possibilities of internal monitoring rather than constant supervision। से कौन कहउछले कि पावर टा को केमिति कंट्रोल करा जाय परिबो, हमर डिसिप्लिनरी पावर को केमिति कंट्रोल करा जाय परिबो, ताको तमे सुपरविजन करी कंट्रोल करि परिबोनी, रादर इंटरनल मॉनिटरिंग। जेतबेले तमे निजर सपोज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अछि, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऊपर आउ जने जदि कि सुपरविजन करिवो सेटा कंट्रोल न भी हे पारे, रादर जदि से माने निजर इंटरनल डिपार्टमेंट भीतर जदि चेक्स एंड बैलेंस रखिबे ताहले से ऑटोमेटिक कोन हे परिबो, ऑटोमेटिक स्टा तमरो कंट्रोल हे परिबो। ओके, नेक्स्ट एठी थला कि द intimate relationship between power and knowledge led Foucault to coin the term knowledge is power। ओके, knowledge is power ए जिंसटा तमरो अछि। सो एठी जानिबा कि फोकोंकर किछि किछि व्यू अछि। सो फोकस माइक्रो व्यू ऑफ पावर कोन, दैट पावर इज omnipresent, जोटा कि पावर इज एवरीवेयर, dispersed throughout society in capillary network of discourses। Again, Foucault productive conception of power कोन कि power generates identity and stability, not just coercion। coercion तो होची बट ता सहित जन व्यक्ति को पाखर जेतले पावर आसी जाउची से कोन तांकर आइडेंटिटी भी अधिक होची एवं तांको गोटे स्टेबिलिटी भी मिलुची। एडा ऑब्वियस कथा, जेतले जन ऑफिसर होचती किबा जन मिनिस्टर होचती तो फर्स्ट टाइम पे ताको लोक मे भी चिन्ह नथिबे, बट वंस से पावर को आसी साला परे तांकर ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी भी अधिक होची एवं स्टेबिलिटी भी तांको अधिक होची। And focus interactive view of power कोन, that individuals are not passive objects of power but loci where power and resistance intersect। okay, so this is interactive view of power, जोथि कि पावर एवं रेजिस्टेंस जो जगह रे पावर अछि सेठी रेजिस्ट हबो ही हबो। सेतबे आबे जानि छे
गवर्नमेंट रो पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इन्फ्लुएंस करिया पे प्रेशर ग्रुप्स गुडार बहुत बड़ा बड़ा रोल अछि ओके सो प्रेशर ग्रुप्स रो गोटे काम कोन आमे समस्त हमर भारत रो डेमोक्रेसी रे आमे गोटे कोन करछे हमर रेफरेंडम नाही तार अर्थ हमर भारत रो डेमोक्रेसी रे आमे केवल वोट देकी जितै परिबा बट तांको रिकॉल करि परिबे आमे तांको कोन करि पाए रिकॉल करि परिबा नाही जदि हमको तांको काम भलो न लागिला सो वी हैव टू वेट फॉर 5 इयर्स तो एठी सी जो कहउछंती कि अ, एठी तमको जदि पावर मिलुची यू आल्सो गेट द रेजिस्टेंस नेक्स्ट कोन कि फोकस एक्सटेंशन ऑफ पावर बियॉन्ड स्टेट इंस्टीट्यूशन सो स्टेट इंस्टीट्यूशन रो भी अधिक नॉट जस्ट द स्टेट बट वेराइटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन दे कैन यूज द पावर सो फाइनली हमें एठी कोन करबा ब्रीफली हमें ताको कंक्लूड करबा कि focus theory has had a profound impact on our understanding of power in modern society. It has helped us to see how power is exercised in subtle and insidious ways, how it shapes our thoughts, behaviors, and bodies. So, this is a model answer on the question power is everywhere. जोटा कि focus theory power under रे हम discuss करले. Okay? बुझी होची जिनस गुड़ा all of you? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାର ଆନ୍ସର ତମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରପରଲି ଦେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତମର ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ବିକଜ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ତମର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି ଯେମିତି ଲିବରାଲିଜମ ସୋସିଆଲିଜମ এইଗୁଡାର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ବ୍ରିଫ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ସିଲାବସ ନ ସାରିଛ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଲାଗିବ ସୋ ମୋର ସଜେସନ ରହିବ ଯେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟର ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ତମେ ଟିକେ ସିଲାବସ ଗୁଡା ସାର ଓକେ ତ ସିଲାବସ ଗୁଡା ସାରିଲେ ଡେଫିନେଟଲି ତମକୁ ଆହୁରି ବି ଇଜି ହବ ଏବଂ ତମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ ବିକଜ PSIR ଅପସନାଲରେ ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ସନ ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ସନଟା କେତେବେଳେ ପସିବଲ ସେତେବେଳେ ପସିବଲ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ଏବଂ ତାକୁ ବସ୍ ତମକୁ ଏଙ୍ଗେଲ ଦେବାକୁ ପଡିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ हाँ एक क्वेश्चन देखिए कार्ल मार्क्स contends that fundamental trigger for revolution is the discord that emerges between modes of production and means of production. This is important. These are the key words. Huh? Modes of production and means of production. Conduct a critical analysis of this assessor. Question टा बुझो कार्ल मार्क्स कौन कहउछंदी कि रिवोल्यूशन को किए ट्रिगर करे जदि दीटा जिनसरे डिफरेंस अछि कोन मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यदि मोड ऑफ प्रोडक्शन एवं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन भितर डिफरेंसेस अछि फ्रिक्शन थियरी हुए दैट इज द रीजन व्हाई तमरा रिवोल्यूशन लोक करंती ओके तुम समस्त जानिछो कार्ल मार्क्स इम्तिया जने थिंकर दार्शनिक ही इज अ रिवोल्यूशनरी थिंकर এবং ତାଙ୍କର ଆଇडिଆ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ सो द सोशियोलॉजिज्म कम्युनिज्म रो जो ओरिजिन होची कार्ल मार्क्स इजंट इट सो एटी देखिबा कार्ल मार्क्स कोन कहउछथि कार्ल मार्क्स कहउछथि कार्ल मार्क्स वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थियोरिस्ट ऑफ ऑल टाइम of 19th century argued that it was unsustainable due to the inherent conflict the relation of production and the means of production he believed that the contradiction would eventually lead to a revolution ओके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो माध्यम तुम प्रोडक्शन करूछ मोड ऑफ प्रोडक्शन जहाँ द्वारा तुम प्रोडक्शन करूछ बोथ तार अर्थ गोटे कैपिटलिज्म वर्ल्ड रे कोन होय साधारणतः कि लेबर वर्सेस द मैनेजमेंट कि ओनर तुम कहि परिबो लेबर सब बेले कोन चाहते कि नाही सेमान को तांकर राइट्स अधिकार मिलू तांको भी से भले इक्वालिटी रे समस्त देखो और जो माने कैपिटलिज्म रे मैनेजमेंट थांती कंपनी चलांती इंडस्ट्रियलिस्ट थांती ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି କି କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକ ଟାଇମ କାମ କରେଇ ପାରିବି ମୁଁ କମ ଦରମା ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୋର ପ୍ରଫିଟ ମାକ୍ସିମାଇଜେସନ ହବ ସୋ कार्ल मार्क्स वाज बेसिकली नॉट इन फेवर ऑफ दैट काइंड ऑफ कांसेप्ट सो सी कहउଛନ୍ତି कि जेते पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ एई दीटा जिंस रे तमरो स्टेबिलिटी न आसीची सो दीज आर द रीजन व्हाई रिवोल्यूशन विल हैपन ओके सो एटी देखिबा one of the key criticisms of Marx's theory is that it does not account for the role of cooperation in human society
तो सी कोऑपरेशन इन द ह्यूमन सोसाइटी ता विषय कम उल्लेख कर सो किछिटा अछंती जेंति पीटर क्रोप्टकिन a Russian anarchist argued that history has been shaped more by cooperation than by struggle तो सी कोन आर्ग्यू करछंती तो मार्क्स कोन कहउछंती फॉर एग्जांपल मार्क्स कर ओटे कोट अछि कि द यू नो द पीपल ऑफ द वर्ल्ड यू हैव नथिंग टू लूज बट टू ब्रेक द चेन द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड कोन कोट अछि द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड you have nothing to lose but to break the chain said by whom said by Karl Marx तो सीए Karl Marx सबुले ट्राई करछंती गोटे वायलेंट जदि दरकार परे तमे वायलेंट मीन्स भी तमे आपण ही पारिबो सो Karl Marx is not denying on that but Peter कहउछंती एठी कि why to struggle जदि आमे कोऑपरेशन भितरे लेबर एबे एबे जो हम भारत रे भी जोडा चाली छि दैट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन उभय पक्ष जो फ्रिक्शन होउछ आमे कोन करू आमे बसुछे आमे डिस्कशन करूछे गोटे गोटे बाट आमे मझी बाट आमे गोटे फाइंड आउट करिया पे ट्राई करूछे ओके सो अनदर क्रिटिसिजम्स ऑफ मार्क्स थ्योरी is that it has been used to justify authoritarianism in the 20th century many communist states committed horrific atrocities in the name of revolution तो समस्त जानथिबो हिटलर हेगला स्टालिन हेगला मुसोलिनी हेगला एमाने in the name of revolution एमाने कोन करछले एमाने it has lead to authoritarian and that is further lead to what that is further lead to fascism बुझि परछो so key points कोन एठी हम जानिबा what are the key points Marx argued that capitalism is unsustainable Marx believed that this contradiction would eventually lead to a revolution Marx's theory of revolution has been criticized for being too deterministic and for being used to justify authoritarian regime. Kropotkin argued that the history has been shaped more by cooperation than by struggle. Marx's theory of revolution remains relevant today for its unique perspective on the causes of the social change and the potential for a more just and equitable society. Finally, committee conclude karibo kon likhibo कि Marx's theory of revolution is a complex and controversial topic. It has been both praised and criticized, दुईटी जागा ହେଇଛି, but it remains one of the most influential theory of social changes ever developed. It is important to study and understand Marx's work, even if we disagree with some of his conclusions. Okay? ଯେମିତି ପ୍ଲାଟନ को ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବାନି ସେମିତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ को भी ଆମେ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବା ନାହିଁ so this is the question ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କିଛି ନୂଆ question this is a 15 mark question how far do you concur that the socialism has ceased to be significant ideological influence since the latter half of 20th century this is part 1 of the question this is part 1 ଏଥିରେ ଦିଟା part ଅଛି okay this is second part part 2 what are the potential ramifications of the expanding divide brought about by the globalization on the prospects of socialism in the future dita part अछि गोटे part कहूछि कि 20th century ର end रे तमको कोन लागुछि how far do you agree or do you concur that later half of 20th century रे socialism रो जो significance सेटा कमिछि कि second कोन कहूछि कि what are the potential ramification of expanding divide brought about by the globalization जोगु socialism रो कोन impact ହେଇछि okay let us understand आमे कोन करिया first briefly आमे socialism ऊपर लिखि दबा कि what is socialism is a philosophy born in response to capitalism criticizes its inherent exploitations and advocates for social ownership of the means of production grounded in the core value of equality okay so briefly आमे कोन कले what is socialism आमे explain करि देले its multifaceted nature with many schools of thought has earned its analogy of hat without a fixed shape तो next आपण देखिबा वर्ल्ड वॉर 2 परे स्पेशली द 20th सेंचुरी परे आमे कोन देखिले कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म रो जोटा ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसएसआर साधारणतः आमे ब्रेक डाउन देखिले सेठी ओके तो सेमती हमर फ्रांसिस फुकुयामा जोटा गोटे कांसेप्ट दैछन्ती एंड ऑफ हिस्ट्री thesis consigned socialism to history's dustbin एंड ऑफ हिस्ट्री से कोन कहछन्ती एंड ऑफ हिस्ट्री कहछन्ती कि पूरा वर्ल्ड विल कन्वर्ट इनटू लिबरलिज्म
to socialism, slowly it will fade away. Yet socialism retain relevance. आज भी socialism ର relevance ଅଛି. The contradiction of market fundamentalism led to resurgence of left-leaning government in Latin America. Social liberals like Amartya Sen emphasized investing in people, upholding socialism's role as a human critic. Okay. ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି Washington consensus with Thomas Piketty addressing wealth and income inequalities. ସେଇଭଳିଆ civil society protest against Washington consensus inequalities such as Seattle protest. Global crisis further underscored socialism importance in the era of class of civilization. Class of civilization ମୋର ସେଠି କ'ଣ ହବ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଫୁକୁୟାମା କ'ଣ ମେନସନ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ ଅଫ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରେ କି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ଲାसेସ୍ ହବ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଭିଲାଇଜେସନ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଆଇଡିଓଲୋଜି ବେସ୍ଡ ସିଭିଲାଇଜେସନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସୋ ଏଠି କି ପଏଣ୍ଟସ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ The socialism has emerged as a critique of capitalism's exploitation, advocating for social ownership and means of production. How however, the contradictions of market, the contradictions of market fundamentalism and global crisis have revived interest in socialism. So, briefly conclude in a world constantly grappling with inequality, socialism enduring relevance reminds us the need of prioritizing equity and build a more just and equitable society. अर्थात it is socialism maybe तमरो application रे काम न करि पारे but कि socialism रो कोन relevance अछि that it continuously remind करूची कि हमरो एठी inequal world रे इक्वालिटी इक्विटी रो केते प्रावधान अछि द्वितीय जिंस सोशलिज्म आल्सो एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस टू द लिबरलिज्म अब जेंति फॉर एन एग्जांपल मोड देबी कि राज्यसभा और लोकसभा बोथ ऑफ देम डोंट हैव इक्वल पावर कोहा जाय लोकसभा रो अधिक पावर अछि किंतु राज्यसभा रो भी इक्वली इंपोर्टेंट अछि बिकॉज़ राज्यसभा गोटे एक्ट करे कोबला रेजिस्टेंस हिसाब रे एक्ट करे कहा अगेंस्ट रे लोकसभा अगेंस्ट रे अदरवाइज को हबो यदि लोकसभा तो ऑब्वियसली तमरो मेजॉरिटी अछि तो समाने जहा चाहिबे से बिल पास कर दे पारिबे तो सेमती आमे जदि लिबरलिज्म एंड सोशलिज्म भितर तमे कहूचो तो सोशलिज्म ऑलवेज बैलेंसेस द लिबरलिज्म तमे कहि पारिबो सोशलिज्म मे नॉट बी रेलेवेंट मे नॉट बी प्रैक्टिकली सब जगह रे पॉसिबल न हे पारे बट लिबरलिज्म को जेमती ओवर एक्सरसाइज न हो लिबरलिज्म जेमती तार बाउंड्री उल्लंघन न करू तो तापे सबले सोशलिज्म कोन हो सबले चेक एंड बैलेंस टाइप रो उडे काम करे तो तुम याकू लिखि पारिबो ओके सो दिस इज द ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आउ किछरा क्वेश्चन देखिबा लेट अस अंडरस्टैंड हां गोटे इंडियन ये ऊपर देखिबा पचारची एटा होची 5 नंबर रो क्वेश्चन फिफ्थ रो क्वेश्चन दीज आर कंपल्सरी द बुद्धिस्ट एंड हिंदू ट्रेडिशंस विद इन इंडियन पॉलिटिकल धर्मशास्त्रस exhibit marked distinctions while sharing common underlying assumptions. Investigate this dynamic. कौन कहूँ कि बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन विद इन इंडियन पॉलिटिकल धर्मशास्त्र समटाइम्स माने को सिमिलर कहा जाए बट समटाइम्स देयर आर मेनी डिस्टिंक्शंस बहुत सारे डिफरेंसेस भी अछि सो बेसिकली तुमको कंपैरिजन पचाती छी ओके लेट अस अंडरस्टैंड हम केमती स्टार्ट करबा भिकु पारिक जन व्यक्ति असुंती थिंकर इंडियन थिंकर highlights the enduring aspects and transformative changes in ancient Indian political thoughts, especially in response to a new religions or traditions like Buddhism, regarded as Hinduism's rebel child. तो सी कौन मेंशन करूछंती सी कहउछंती कि बुद्धिज्म इज हिंदुइज्म's rebel child अर्थात हिंदुइज्म रो बुद्धिज्म दा बाहरी छी एवं से सेपरेट हे कि निजर गोटे आइडेंटिटी से क्रिएट करे छी सो अर्थ एठी हमें कंपेयर करबा हिंदुइज्म आ बुद्धिज्म ऊपर कौन कौन बेसिस रे ओरिजिन ऑफ स्टेट बेसिस रे बट हिंदुइज्म रिलेट्स टू अजक्ता माने एनार्की व्हाइल बुद्धिज्म एसोसिएटेड विद फॉल ऑफ मैन द एमर्जेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बुद्धिज्म अलाइंस विद द कॉन्ट्रैक्चुअली थ्योरी ऑफ स्टेट ओके हिंदुइज्म रो अलगा अछि ओरिजिन ऑफ स्टेट रे केमते अजक्ता गोटे एनार्की थिला सब आडे
कोटी भी रूल्स नथिला देन हिंदुइज्म इज एक्सप्लेनिंग कि स्टेट केमिति ओरिजिन ହେଇଛି बट बुद्धिज्म केमिति एक्सप्लेन करछन कि फॉल ऑफ मैन मनुष्य माने हताशी कि थिले तो सही हिसाब रे तांको गोटे स्टेट दरकार देन दैट इज द मीनिंग जोठू स्टेट ओरिजिन ହେଇଛି रूलर हिंदुइज्म डीम्स द किंग एज अ सन ऑफ गॉड धर्मशास्त्र रे तमे मनु को विषय पढिছো ओके तो मनु को विषय पढिছো तो राजा को कौन कहा जाए सन ऑफ गॉड भगवान पुत्र सी while Buddhism rejects the divine basis considering king is the elected representative महास्मत ओके बुद्धिज्म रे से कौन कहउछन्ती रूलर जी सी होउछन्ती सिलेक्टेड नुह सी होउछन्ती इलेक्टेड ड्यूटीज ऑफ द रूलर बुद्धिज्म emphasizes righteous rule for the welfare of the people urging the king to be liberal selfless noble and follow dharma as an institution of moral regenerations এটা কিଏ এটা হচ্ছে তোমার गोटे रूलर रा कोन ड्यूटी होबा दरकार ओके सो नेक्स्ट होची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हिंदुइज्म सपोर्ट्स मोनार्की while buddhism favors a republican government with a deliberately democracy principle evident in buddhist sanghas ओके सो एटा गोटे हम डिफरेंस हम जानू जेंडर कोन हिंदुइज्म इज मोर पैट्रिकल while buddhism grants women equal status by admitting them into sanghas तो संघ रे महिला माने भी कोन हे परिबे समान एडमिट हे परिबे सो दिस इज द की डिफरेंसेस सो डिस्पाइट दिस डिस्टिंक्शंस बोथ हिंदुइज्म एंड एम्फसाइजेस धर्म माने एउडा त डिफरेंसेस हे गेला बट किछिटा सिमिलरिटीज भी हम जानि छु कोन गोटे होची धर्म एंड शेयर फंडामेंटल बिलीव्स इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंशियल पास्ट लाइव्स ऑन डेस्टिनी तो पास्ट लाइव्स ऑन डेस्टिनी ना हम कहू कि मनाई मोर भाग्य जोडी अछि सेटा बोथ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म रे देखा जाए the role of a knowledgeable king see भी देखा होगा protection of good impartial justice support for the neighbors all of the provisions are similar provisions between Hinduism and Buddhism अच्छा मैं आगे देखिए while there are differences conclusion करिवा Hindu and Buddhist political thought ultimately share many similarities differing in degree rather than kind ସେମାନେ ଖାଲି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଯେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍ both are same okay so this is what you should write related to जब ये क्वेश्चन पड़े हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म द डिफरेंसेस को नहीं now let us understand आउ गोटे हमें जानिबा क्वेश्चन द आंसर दिस क्वेश्चन जो मॉडल आंसर था मु तमरो स्टूडेंट पोर्टल रे अपलोड कर देबी तबे आराम से सेटो डाउनलोड करके पढ़ी पारिबी let us understand এটা ଗୋଟେ পয়েন্ট আছে ভালো পয়েন্ট ভালো কোশ্চেন ଗୋଟେ man being by nature all free equal and independent no one can be put out of his state and subjected to the political power of another without his own consent said by whom said by Locke question बुझो Locke कोन कहउचंती कि man मनुष्य by nature free equal and independent कहउचंती कि तमे फोर्सफुली ताकू कोनोसी प्रकार पॉलिटिकल पावर देई परिबोनी जदी सीए ता पाई राजी नुह तो ता ऊपर कहिसंती तमे डिस्कस करो तमे केमते लिखिबा आंसर स्टार्टिंग में से विषय लिखिबा जॉन लॉक इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन लिमिटेड गवर्नमेंट एंड नेचुरल राइट्स Locke rejected the theory of absolute authority of the state, arguing that the government's power is limited by natural rights of the people. So Locke argued that the state of nature is a state of peace and mutual assistance. Okay, where people enjoy natural rights to life and liberty and property, government is necessary evil, but its power is limited by natural rights. So government necessary evil, government darkar, but government ro power ta it is limited. It is limited by what? Limited by the natural rights of the people. And natural rights that the individuals are basically they are independent, they are equal, and they are
3 ଆଉ କଣ ଦେଖିବା key points Locke argued that the state of nature is a state of peace and mutual assistance where people enjoy natural rights of life, liberty and property. Government is a necessary evil, but its power is limited by natural rights of the people. The government cannot take away these rights or make the laws that deprive people of their life, liberty and property. जदि आम लॉग को हब सहित आम कंपेयर करिया ब्रीफली because log ଆଉ hub both they have given the contract theory. Locke's theory of limited government is a stark contrast of the theory of absolute authority of the state put forwarded by Thomas Hobbes. समस्ते जानिछ हब्स कर जो गोटे कांसेप्ट अछि लेवियाथन. Okay, Hobbes कर one of the most famous work of Hobbes is Leviathan. Leviathan रे साधारणतः थॉमस हब्स कौन करछन्ती सी अधिक स्टेट रो जो पावर टाको सी अधिक करिछन्ती बट जॉन लॉक वांट्स अ लिमिटेड स्टेट. So एठु हमें कोन लिखिबा लॉक एज अ थियोरिस्ट ऑफ कंसेंट. लॉक्स थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट. अर्थ कि गवर्नमेंट आउ स्टेट तो नेसेसरी बट दैट डजंट मीन कि गवर्नमेंट एकछत्रवादी हे जीवो. अर्थ जे पर्यंत लोक मानकर कंसेंट नाही जे पर्यंत लोक माने तांकर अप्रूवल देई नाहंती से पर्यंत लिमिटेड फंक्शन करिबा उचित. नेक्स्ट एटी देखो कंक्लूजन में ब्रीफली कौन लिखिबा कि लॉक्स थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट एंड नेचुरल राइट्स is a foundation principle of liberal democracy. So Locke's work has had a profound impact on political thought and has helped to shape the modern world. So एवला तमे टिके आंसर लिखिया पे ट्राई करो. Okay, so these would be much more important. I would a question answer हमें let us see. I think एटा गोटे देखो एटा गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि. कहिछि कि thoroughly assess the modern significance of Kautilya's insights regarding geopolitics and foreign policy in 21st century. So कहिछि कि कौटल्य जो तांकर देइछनि मंडल सिद्धांत एटसेट्रा हमर आजिका डेट रो फॉरेन पॉलिसी से डिफरेंसेस तार रेलेवेंस कोन को. तो ताको हम केमते लिखबा ब्रीफली स्टार्ट हम कर दबा कि मैक्स वेबर एंड जवाहरलाल नेहरू हैव बोथ प्रेज कौटल्य's अर्थशास्त्र as a classic text of statecraft. Remains relevant the contemporary Cauchy's Mandal theory, which describes the concentric circles of friends, foes, and naturals, the neutrals and surrounded state, have been particularly influenced in geopolitics. माने तांकर मंडल सिद्धांत जोड़ा मंडल थ्योरी आज भी तमे कहि परियो फॉरेन पॉलिसी रे सेटा यूज होछि. ता विषय तमे टिके ब्रीफली तमे कहिबो ब्रीफली लिखिबो. तो आउ कोन लिखिबो कि despite the challenges Cauchy's geopolitics remains relevant in certain regions such as Asia Pacific, South Asia. India's relation with Pakistan, China for an example. Neighbor as a natural enemy. हमरो कोन होची हमरो नेबर जी है से बाय डिफॉल्ट कोन हे जाउची हमरो एनिमी हे जाउची पाकिस्तान. बट हां कोटले तो केबे भी कहन जे नेबर मानको सहित सब बेले एनिमी करे. समटाइम्स फॉर एन एग्जांपल बांग्लादेश सहित हमरो भलो रिलेशन अछि हम ट्राई करू छु एटलीस्ट बट पाकिस्तान सहित खराब रिलेशन अछि. ओके सो एठो हम कोन कंक्लूजन करबा कि Cauchy's geopolitics is a complex nuance theory that has been adapted to meet the changes of the different era. While some of its aspects may be less relevant in today's world, but its core insight into nature and interstate relations and the importance of strategy remain valuable for the policy maker. अर्थ कि कौटिल्यंकर से समय दिया जाइथिबा किछि किछि मात्रा रे जो तांकर अछि पॉइंट्स गुडा मे बी आज का डेट रे रिलेवेंट एते न हे पारे बट तांकर कोर पॉलिसी विल ऑलवेज रिमेन रिलेवेंट. आज भी फॉरेन पॉलिसी रे तांकर कोर पॉलिसी यूज होछि. सो स्टूडेंट्स ये होछि तमरो टेस्ट 1 फ्रॉम ब्रीफ गोटे डिस्कशन तम सहित करिछि. मु आशा करबी दैट मु तुमको बुझाई देछि कि केमिति कोन तुम लिखिबो. सो ये मॉडल आंसर ता तुम स्टूडेंट पोर्टल रे तुम डाउनलोड करो. डाउनलोड कर दे कि भलो रे तुम पढि नियो कि कोन कोन पॉइंट्स कवर करिया पड़िबो केमिति कोन एंड गोटे भलो आंसर लिखिया पे ट्राई करो.